శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహంకారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. நீலா சமேத ஸ்ரீ சீனிவாச பரபிரம்மனே நமக. மற்றுமோர் தெய்வமுண்டோ மதியில்லா மானிடங்காள் உற்றபோது அன்று நீங்கள் ஒருவனண்டுணரமாட்டீர் அற்றமேல் ஒன்றறியீர் அவனல்லால் தெய்வமில்லை கற்றினை மேய்த்த எந்தை கழலினை பணிவன்பீரே. அழகான பாசுரம். கற்றினை மேய்த்த, அதாவது மாடுகன்றுகளை மேய்த்தவன் யார்? கோவிந்தன். இங்கே நம்மையெல்லாம் காத்து ரட்சித்துக் கொண்டிருப்பவர் யார்? கோவிந்தன். அவன் துவாபரயுக கோவிந்தன், இவன் கலியுக கோவிந்தன். அவன் கோவர்தனகிரியை குடையாய் தூக்கி பிடித்தான். ஆயர்களையும் பசுக்களையும் பெருமழையிலிருந்து காப்பதற்காக இவன் திருமலகிரியில் நிற்கிறான். நம் போன்றவர்களை கலியின் பிடியிலிருந்து காப்பதற்காக பக்தர்களே இருவரும் ஒருவரே. ஆக இந்த கோவிந்தனின் உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிக்கு உபயநாச்சிமார்கள் நடுவரும் நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. இதை தரிசித்து கோவிந்தனின் திருவருளை பெறுவதற்கு பக்தர்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது டி.கே. லக்ஷ்மி கிருஷ்ணசுவாமி. திருக்கல்யாணத்தின் ஆரம்பத்தில் சங்கல்பம் நடைபெற்றது. இனி தொடர்வது ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனமும் தஸ்மை சமஸ்த வேதார்த்த விதே விகணசே நமः. ஹிருதஸ்மிருதி பூர்ணம் சாஸ்திரகல்லோல சங்குலம் விஷ்ணு பக்திதகம் சுத்தம் வந்தே ஸ்ரீ விகணோர்ணவம் பிராணாநாயம்ய. ஓம் பூः ஓம் भागं स्वः ஓம் मः उञ्जनः भागं सत्यम् ஓம் தத்சத்ரவரேஹ்யம் भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवमा प्रचोदयसं तं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं अस्यां शोधौ सुदेदस्य वतो नारायणस्य
श्रियःपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभुवनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिला प्रतिपदिस्थिनः सर्वोत्तन्द्रविशुद्धं शान्तत्थं स पुण्यावाचकर्मरिष्यन् आधुनिर्विज्ञानप्रसमाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये ओं धारा सप्तशमांशेषु सरस्वरिपूर्धेषु अपोवृह्णन् बलिपादेशे गृणां नृत्तां तर्कं शर्मा यदमापस्वा शतमा शान्ता शान्तमा शुभा शुभमा पोदा पोदमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमामृतां दर्शाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पुता सूर्य सरस्वती आपो वायुदं सर्वं विश्वाभूतान्यवः प्राणावाप पशुवापो नमापो सम्राडापो विराडाप स्वराडाप छन्दाविशापो ज्योतिविशापो यजुविशाप सत्यमाप सर्वादेवतापो भूर्भस्वरापो अस्मिन् कुम्भेङ्गासेथनावाहयामि यतेशम्बरणे सहस्रमज्ञाः पाशाविदाः पुरुत्रा तेभ्योऽन्द्रसताद् विष्णुर्ष्वे देवां जन्तुमत स्वस्या वर्णमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्तां ददमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वर्णान्मः वर्णस्यैदमासनं वर्णान्मः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि यते प्रतस्त्रोत्र्याभरण उपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमानसकर्मणा निर्विघ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं ज्ञाप्तिं शृङ्खेतं शोष्परधवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुच्येत् आग्नेयोऽस्माद्दिदामि यत्त्वाशे दातं मित्रोत्सम्भवः वैराजन्ते सुतन्निधत्तां वृक्षां वृषाभुदानामनादि यामे स्थान् दातु ओं भूः पद्माकारमण्डले सृष्टिनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्तत्नीं सूत्रतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि तत्तत्नी सुसक्सेनस्येदमासनु विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्फुरतो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुपास्यता कर्मणान् विघ्नान्ते आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् समाप्य कुर्यात् सर्ववारस्य सक्सेनस्य पूजनं भगवद्ब्रह्मज्ञातः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये ओं वाचतं सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वा सुस्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापति प्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः श्याम्यन्तुघरान् श्याम्यन्तुपापान् श्याम्यन्त्वायितेः शुभान् वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्याम्यन्तुघरान् श्याम्यन्तुपापान् श्याम्यन्त्वायितेः शुभान् वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्याम्यन्तुघराणि श्याम्यन्तुपापान् श्याम्यन्त्वायितेः शुभान् वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधाभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रेधानि देवतं समूढमस्वागं सरे त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि वसुदेतोः वृतानि वसुसि इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा प्रसंस्वरेः दिवि वचक्षुरा तदं तद्विप्रासो विपन्यवोचार्धवागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तरस्य द्रविणोदा सरस्य प्रगंसते द्रविणोदा वीरविदुषण्णो द्रविणोधाराः स्थिते घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वितोपविशं यदा वै सूर्योदयति अथ नक्षत्रं नेति यावत् तत् सूर्यो गच्छेति यत्तधन्यं वस्येति तावत् गुरु तत्कार्ये स्यात् पुण्याः यव कुरुते ओं भूः अतिपुरोत्कृष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिल परिपरिस्ना सर्वोत्तन्द्रविशुद्धं शान्तत्वं स पुण्यावाचमणि पुण्यां ब्रवन्तोः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां ब्रवन्तोः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां ब्रवन्तोः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनीन्द्रोर्दस्वास्तनः पूषाश्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्षरिष्णेमि स्वस्तिना बृहस्पतिर्ददातु ददातु ओं भूः अतिपूर्वोत्कृष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिल परिपरिस्ना सर्वोत्तन्द्रविशुद्धं शान्तत्वं स पुण्यावाचमणि स्वस्तिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्माभ्येन संसद्यां तरुणदेवमित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवें सदस्वीराः ओं भूः अतिपुरोत्कृष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिल परिपरिस्ना सर्वोत्तन्द्रविशुद्धं शान्तत्वं स पुण्यावाचमणि वृद्धिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणरुद्धिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणरुद्धिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामय भुवस्थानम् ऊर्जेदादन महेरणाय चक्षे योपस्योदमारसस्तस्य वाजयतेनः उषतीरिव मात्रः अस्मारङ्गमावो शिक्षया जन्मधा आपो जनेथा जनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायाः जातः खस्वभोजाः सुन्दरः अग्निया गर्भन्धद्रविरूपास्तान् आपसग्गुस्याना भवन्तु पवमानस्वर्जिनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता समनात्मा
पुनन्तु महादेवजनाः पुनन्तु मनवो धिया पुनन्तु विश्वायुवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवविद्यते अग्ने कृत्वा कृतकुम्भरणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदेशाः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रोः शतोऽद्यामुगं हिरण्मयोः तेन ब्रह्मविदावयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीतिः सहमा पुनातु सोमस्वस्त्यावरुणसमीच्याः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जयन्त्वा पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गाते यज्ञाय गाते यज्ञमते दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातभेषणं षण्णास्तुद्यपदेः षञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राचाहान्ति देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणायां दिस्माताः पितरा मार्जयन्तां प्रतीच्याहां दिशग्रहाः पशुवा मार्जयन्तां उदीः चान्दिशा भोषदेव वनस्पतिः मार्जयन्तां ऊर्ध्वायाः यज्ञः संवत्सरो यज्ञमधर्मार्जयन्ताम् अथो धराधरे नागेभ्यः मार्जयन्ताम् वास्तोःस्पदे प्रजानि यस्वान्स्वा वेषाणमिव भवानः यत्ते महे प्रदन्नाशस्वत्सने दत्तवदेशं चतुष्पदे वास्तोःस्पदे शग्मया सुमसदा ते सक्षेमे शरण्यागात्मत्याः आवक्षमुद्योगैरन्नो यूजं पातस्तस्तविस्वधानः अमीवः वास्तोःस्पदे विश्वारूपाण्या विषण्णे सशात् सेवयेदिनः अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायानि दोष्यन्तोः तमः कदम्बस्य दिवीतशोको धातुप्रसादाहान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रवन् सप्ताः सप्ताक्षसमितः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां नीताः सप्त सप्त अतः समुद्राग्रे यत्सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयोरसाश्च तेनेष भूततिष्ठत्यन्तरात्मा वर्णान्माय सक्सेनान्मः पुनः पाद्याजं समर्पयामि वर्णान्माय सक्सेना यथा भासा गुडोभारनिवेदयन् ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च அதில் வரும் தடைகளை நீக்குபவர் சேனை முதலி எனப்படும் ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனர். எம்பெருமானின் நித்திய சூரிகளில் முதன்மையானவர். ஸ்ரீ வைகானசமோ ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திரமோ எந்த ஆகமம் ஆனாலும் ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனரை ஆராதித்த பின்னர்தான் அத்தனை கோவில்களிலும் உற்சவங்கள், ஹோமங்கள், பூஜைகள் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றன. அதே போன்று நமது மலையப்ப சுவாமியின் திருக்கல்யாணத்திலும் முதலில் விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம் நடைபெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து சுத்தி புண்ணியாக வாசன கைங்கரியம் நிறைவு பெற்று இப்போது அங்குரார்ப்பணம் என்கிற மங்கள காரியத்தை தொடங்கியிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. குன்றம் ஏந்தி குளிர்மழை காத்த பிரான் என்றார் நம்மாழ்வார். ஆக இவன் கிரிதரன். இந்த கிரிதரனின் திருக்கல்யாணத்தில் இதோ அஷ்டதிக்கு பாலகர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியம் இப்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு, தெற்கு, வடகிழக்கு, வடமேற்கு, தென்கிழக்கு, தென்மேற்கு இவைகளே 8 திசைகள். இந்த 8 திசைகளையும் பரிபாலம் பண்ணுவதற்காக பகவானால் நியமிக்கப்பட்டவர்களே அஷ்டதிக்கு பாலகர்கள். இவர்களை எப்படி அழைப்பது? இந்த காலத்தில் வீடு வீடாக போய் கல்யாண பத்திரிகை கொடுக்கிறோம். சீனிவாசர் பத்மாவதி திருக்கல்யாணத்தின் போது கூட கருட பகவான் 3 லோகங்களுக்கும் பறந்து சென்று கல்யாண பத்திரிகையை அளித்தாராம். பக்தர்களே, ஆனால் இப்போது இங்கே இந்த அஷ்டதிக்கு பாலகர்களையும் மந்திரங்களால் ஆவாகனம் பண்ணுகிறார்கள். அதன்பின் அதோ அங்கே வைத்திருக்கும் பாலிகைகள் எனப்படும் நவ தானியங்களிலும் மங்கள நீரை தெளித்து புஷ்பங்களாலும் துளசியாலும் பூஜித்து தம்பதிகளின் இல்வாழ்வு செழிப்பாக இருக்க இந்த பாலகர்களை வேண்டிக் கொண்டு அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை இப்போது முடிப்பார் அர்ச்சக சுவாமி. அங்குரார்ப்பணம் என்றாலே ஆரம்பமாவது என்று பொருள். எந்த சுப காரியங்களும் சுபமாக முடிவதற்கு இந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை முதல் சடங்காக வைத்துள்ளார்கள் நம்மவர்கள். நம் வேண்டுதலுக்காக நித்திய கல்யாணம் செய்து கொள்ளும் எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்திலும் இப்போது இந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம் கிரமமாக நடந்தேறியது. இனி அடுத்த கைங்கரியத்துக்கு வர உள்ளோம். அது ரட்சை பூஜை. பக்தர்களே, நமது திரைமலையில் கடைபிடிக்கும் ஆகமம் ஸ்ரீ வைகானச ஆகமம். விக்கனச முனி அருளியது. அதன்படி எம்பெருமானை விட்டு அகலாது இருக்கும் அந்த ஆதிசேஷனை இந்த ரட்சையில் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற பூஜையை இப்போது செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி.
சென்றால் குடையாம், இருந்தால் சிங்காதனமாம், நின்றால் மரவடியாம், நீள்கடலுள் என்றும் புனையா மணிவிளக்காம், பூம்பட்டாம் புல்கமனையாம், திருமார்க்கரவு என்பது ஆழ்வார் பாசுரம். நகராஜமாவாஹயாமி, சார்சேஷமாவாஹயாமி, சேஷமாவாஹயாமி, ஆனந்தமாவாஹயாமி. பிரதரதேவதாभ्यो நமः. இதமாசனம் இதம் பாத்யம் சமர்ப்பயாமி, இதமர்घ्यं சமர்ப்பயாமி, இதமாச்சமனம் சமர்ப்பயாமி. சர்வோபச்சாரார்த்தம் அக்ஷதான் சமர்ப்பயாமி. ஹரி ஓம். ஸ்வஸ்தி நோः வேதாம்சுநாभः ஸ்வஸ்தி தேவே ஜனருணः ஸ்வஸ்தி பூஷாம் சரோதாதனः ஸ்வஸ்தி द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्ते वायुं बभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ते स्वस्ते आदित्यासो वन्दनः विश्वे देवानो अद्या स्वस्ते वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ते देवाः वन्त्रिभुवः स्वस्ते स्वस्ति नः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति नीन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नः एते कृधि स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनर्थताघ्नता जानता संगमेमहि स्वस्तेनन्तार्क्षमृष्टिनिमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसगं समत्सु बृहद्यसो नाम वारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयं च स्वस्त्याः त्रयं मनसार्ताक्षं प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्वं बाधे स्वयन्नोऽस्तु शुभगुं शुभम्. ரட்சை பூஜையை தொடர்ந்து இப்போது நடைபெறப் போவது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். ரக்ஷை என்பதை காப்பாகவும் கொள்ளலாம், கங்கணமாகவும் கொள்ளலாம். ஒரு விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்த உதவுகின்ற கங்கணம். ஒருவன் ஒரு விஷயத்தை முடிக்க வேண்டும் என்றால் என்ன சொல்கிறோம்? அவன் இந்த காரியத்தை சாதிக்க கையில் கங்கணம் கட்டி கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்வோம் அல்லவா? இங்கே பகவானின் சங்கல்பம் என்ன? நம்மை போன்றவர்களை இந்த கலியின் பிடியிலிருந்து ரட்சிப்பது. அந்த சங்கல்பத்துக்காகவே வைகுண்ட லோகத்தை விட்டு கீழே இந்த திருமலைக்கு இறங்கி வந்திருக்கிறான் எம்பெருமான். ஆக அந்த சங்கல்பத்தை நினைவுபடுத்த இந்த ரக்ஷை என்றும் கொள்ளலாம். இதில் இன்னொன்றும் உள்ளது. அதாவது தீக்கண்களின் திருஷ்டி எதுவும் படாமல் இருக்க ஒரு காப்பாக பயன்படுவது. நமது இல்லங்களில் கூட பிறந்த குழந்தைக்கு காற்று, கருப்பு எதுவும் அண்டாமல் இருக்க வேப்பிலை காப்பு, வெள்ளிக்காப்பு, தங்கக்காப்பு என்று அணிவிக்கிறோம் அல்லவா? அவற்றுக்கெல்லாம் இந்த திருஷ்டிகளை போக்கும் சக்தி உண்டாம். இங்கேயோ எத்தனையோ கண்கள் இந்த எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தை தாங்கள் இருந்த இடத்திலிருந்தும் இதோ இங்கே இந்த சம்பங்கி பிராகாரத்துக்கும் வந்தும் தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறதல்லவா? அவற்றில் தீக்கண்களும் இருக்கலாம். அந்த திருஷ்டிப்பட்டு எம்பெருமானின் தேவிகளின் திவ்ய திருமேனிக்கு எந்தவிதமான பங்கமும் ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காகவும் இந்த ரக்ஷை. சசங்க சக்கரம், சகீரிட குண்டலம், சபீத வஸ்திரம், சரசுருகேக்ஷணம், சகார வக்ஷஸ்தல கௌஸ்துபஸ்ரீயம் நமாமி விஷ்ணும் சிரசா சதுர்புஜம் மேகசியாமம் பீத கௌசேய வாசம் ஸ்ரீவத்சாங்கம் கௌசுபோத் வாசிதாங்கம் புண்ணியோவேதம் புண்டரீகாயதாட்சம் விஷ்ணும் வந்தே சர்வ லோகைக்கநாதம். அப்படி எம்பெருமான் சர்வ அலங்கார ஸ்வரூபன். ஆகவே அந்த அலங்கார திருமேனிக்கு எந்த திருஷ்டியும் படாமல் இருக்க இப்போது அந்த ஆதிசேஷனை ஆவாகனம் பண்ணின அந்த ரக்ஷையை இப்போது எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, முன்பே ஆதிசேஷனை பற்றி கூறினேன். சென்றால் குடையாம், எம்பெருமான் செல்லும்போது குடையாகவும், பின்பு இருந்தால் சிங்காதனமாம், அவர் அமர்வதற்கு சிங்காதனமாகவும், நின்றால் மரவடியாம், அவர் நிற்கும்போது மரவடி. அதாவது அன்று ஸ்ரீராமன் காட்டுக்கு புறப்படும் போது அவருக்கு மரவடியாக பயன்பட்டது இந்த ஆதிசேஷன்தானே. ஆகவே நின்றால் மரவடியாம், நீள்கடலுள் என்றும் புனையா மணிவிளக்காம். பார்க்கடலில் எம்பெருமான் சயனித்திருக்கும் போது அங்கே விளக்குகள் எங்கே இருக்கிறது? அங்கே ஆதிசேஷனின் அந்த தலைகளில் மின்னும் அந்த மாணிக்கங்களே விளக்குகளாக பயன்படுகிறதாம். இப்படி எல்லா வகையிலும் எம்பெருமானுக்கு பயன்படும் அந்த ஆதிசேஷன் இப்போது எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண சமயத்திலும் எந்த திருஷ்டியும் படாமல் இருப்பதற்காக இந்த ரக்ஷையில் ஆவாகனமாகி இப்போது எம்பெருமானை கண்குத்தி பாம்பு போல காக்கிறாராம்.
பக்தர்களே, அதைத்தான் இப்போது நாம் இந்த திருக்கல்யாணத்தில் தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அடுத்து அலங்கார ஸ்வரூபனிக்கு துணைவிகளாகப் போகும் அந்த தேவிகளின் சௌந்தரியத்துக்கும் எந்த குறைவும் வந்துவிடக் கூடாதல்லவா? ஆகவே வைகானச ஆகமப்படி கைங்கரியப்பரரான ஆதிசேஷனை மந்திரங்களால் ஆவாகனம் பண்ணின அந்த ரக்ஷையை எம்பெருமானின் திருக்கரத்தில் சமர்ப்பித்துவிட்டு இதோ இப்போது பிராட்டிமார்களிடம் வருகிறார் அர்ச்சக சுவாமி. முதலில் அகலகில்லேன் என்று எம்பெருமானின் பக்ஷஸ்தலத்தில் வீற்றிருக்கும் அந்த ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு ஈசானாம் ஜகதோஸ்ய வெங்கடபதேர் விஷ்ணுர் பராம் பிரேயசீம் தத்வக்ஷஸ்தல நித்யவாச ரசிகாம் தக்ஷாந்தி சம்வர்தினிம் பத்மாலங்கிருத பாணிபல்லவ யுகாம் பத்மாசனஸ்தாம் ஸ்ரீயம் வாத்சல்யாதி குணோஜ்வலாம் பகவத்தீம் வந்தே ஜெகன்மாதரம். இதுதான் ஸ்ரீதேவி தாயார். இந்த ஸ்ரீதேவி தாயாரின் பரிவு எப்படிப்பட்டது என்றால், ஒரு குழந்தை தவறு செய்திருந்தால் கூட அதை பெரிதுபடுத்தாமல் அந்த குழந்தை மீது தந்தைக்கு எந்தவிதமான கோபமும் வராதபடி பார்த்து கொள்ளும் தாய் போன்றவளாகும். தன் பக்தர்கள் செய்கின்ற அந்த சின்ன சின்ன நல்ல காரியங்களை கூட எம்பெருமானிடம் மலை போல விவரித்து சொல்வாளாம் ஸ்ரீதேவி தாயார். இது அருகில் இருப்பவளோ பூமிதேவி தாயார். பூமிதேவி தாயார் பொறுமையின் பூஷணம். எம்பெருமானின் பிரிய மகிஷி, வராக மகிஷி என்று குறிப்பிடுகிறார் சுவாமி தேசிகன். ஆக இந்த பூமிதேவி தாயார் என்ன செய்வாளும் தெரியுமா? அவர்கள் மலையளவு செய்த குற்றங்களை கூட கடுகளவு சிறிதாக்கி எம்பெருமானின் திருவிழியிடமிருந்து மறைத்து விடுவாளாம். ஆக இந்த இரண்டு தாயார்களும் இங்கே இருக்க நமக்கு என்ன குறை? ஆகவேதான் அவர்களது இந்த சங்கல்பத்தை நினைவுபடுத்த இதோ முதலில் சமுத்திர ராஜகுமாரியான அந்த ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு இந்த மந்திரித்த ரக்ஷையை சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, அடுத்து அதோ ஸ்வேத வராக மகிழ்ச்சியான பூமண்டலத்தையே ஆள்கின்ற அந்த பூமிதேவி தாயாருக்கும் இதை அடுத்து இப்போது அந்த மந்திரித்த ரக்ஷையை எம்பெருமானின் சார்பாக இதோ சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, எம்பெருமானுக்கு இரு கண்களைப் போன்றவர்களவா ஸ்ரீதேவி தாயாரும் பூமிதேவி தாயாரும். பருதி மதி கமல நயனன், அதாவது சூரியனைப் போன்றவள் மகாலட்சுமி. அவளிடம் அருள் என்கிற பிரகாசம் உள்ளதான். அடுத்து சந்திரனைப் போல குளுமையானவள். அவளிடம் தயை என்கிற அந்த தன்மை குளுமையாக இருக்கிறதாம். ஆக இந்த இரண்டு தேவிகளும் சேர்ந்து எம்பெருமானிடம் அருகிலிருந்து நமக்கெல்லாம் அவரது அருள் மழையை பொழியச் செய்கிறார்கள் என்பது ஐதீகம். இனி அடுத்து இந்த திருக்கல்யாணத்தை இதோ நமக்காக நடத்தி கொண்டிருக்கிறாரே அர்ச்சக சுவாமி, அவருக்கும் இன்னொரு சுவாமி இந்த கல்யாண காரியங்களில் பங்கம் எதுவும் வந்துவிடாமல் இருக்க, அது கிரியாலோபமாகவும் இருக்கலாம், மந்திரலோபமாகவும் இருக்கலாம், ஸ்ரத்தாலோபமாகவும் இருக்கலாம். எந்த லோபமும் இந்த திருக்கல்யாணத்துக்கு தடையாக வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக அந்த மந்திரித்த ரக்ஷையை அவருடைய கரத்திலும் இப்போது சமர்ப்பித்தார் இன்னொரு சுவாமி. இத்துடன் ரக்ஷாபந்தன வைபவம் இனிதே முடிந்தது. இனி எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். அக்னி பிரதிஷ்டை. அக்னியை சாட்சியாக வைத்து திருமணங்கள் நடைபெறுவதும் நமது சம்பிரதாயம்தானே. வைவாய்கோத்சகர்மாங்கம் ஆகார ஹோமகர்ம ரிஷி ஓம் யத்வான்விந்திரம் ஸ்வாஹாம் சுத்தம் சுத்தேன் சாம்னாஹ शुद्धैरुक्तैर्वाह रुद्धांशं शुद्धाशीर्वाहान् मुक्तो मयि देवाद्रणमाजन्तां मय्यासीरस्तमय देवोति पूर्वेष्टास्यां तन्वासुवीराः मह्ये जयन्तव्यानहव्यागोतिस्सत्यामन सौम्यस्तु ये नौमानिकाः गतमचनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामि उद्ध्वन्यमानमस्यामेध्यां बाप्मानं यजमानस्यन्तु शिवानस्सन्तु प्रदेशस्तन्न माता पृथ्वी त्वकसादा पूतः द्रेण सौम्या कृणद्धगं वृषणा होतविंशति जातवेद भुवनश्रेते हिंसदवसर्जनिषदेः अग्निमश्वत्थादिव्यवागं समीगर्भाजनेन्व्योमि अभूः घृतपदीको घृदयोनिरग्नि घृदै समिद्धोगतमस्यान्नः घृतः पुषस्वासता भन्तगतं क्षयायक्षदेवान् आयुर्दाः अग्निविशोषानो घृतपदीको घृदयोनिरग्नि
स्त्रोदीदेनोद्रोणि अग्नहाजाहिविदे ज्ञानोपदाति ऐतेन मन्यस्व नमतेन मन्यस्व सरस्तेन मन्यस्व देवसवितप्रसव ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मसाद्विषयमस्त्रच वेनाभः सबुद्ध्यामास्तविश्वासश्चोन्मतश्च ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यर्मावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमोधेनुं सोमार्मन्तमान् सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं सुखं सवेमित्रश्रवणं वेदा तस्मै सोमावाहयामि अज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावद्धर्तनागस्विषेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलगस्तत्रयं यज्ञमिजमानस्देहि ओम प्रोक्ष रामप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावद्धर्तनागस्विषेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलगस्तत्रयं यज्ञमिजमानस्देहि ओम प्रोक्ष पवित्रेः स्ववैष्णव्ये स्वयज्ञे स्ववायुभूते स्वविष्णुर्मनसा भूते स्व यज्ञस्य पावनस्तः परसस्य पवित्रेः स्ववैष्णव्यो देवसवितप्रसवना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वैरापो देवीरग्रे भो अग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञमत्यन्तस्मानिन्द्रोणितोर्ये योजमिन्द्रनिध्वं तोर्ये प्रोक्षितास्ता विष्णवे नमः विष्णोऽस्तु भोसि विष्णवे नमः विष्णोऽस्तु भोसि दक्षिणतः विष्णोऽस्तु भोसि पश्चिमसौदत्तान् देवेभ्यः विष्णोऽस्तु भोसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णपः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावद्धेतुर्नागस्य यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलगस्तत्रयं यज्ञमिजमानस्देहि ओम प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावद्धेतुर्नागस्य यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलगस्तत्रयं यज्ञमिजमानस्देहि ओम प्रणय को वः प्रणेतु सः प्रणयत्वापो देवी प्रणयाणि यज्ञं संसादयन्तनः इदं वदन्ति हे गतोष्टादागस्तास्तपोषमिजमानस्देहि को वोयनक्तु सवोयनक्तु समयन्तान् देवीर्षः पात्रान् देवयज्ञायैः समयन्तान् देवीर्षः पात्रान् देवयज्ञायैः दक्षिणप्रदो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजातिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयं सोममावाहयमग्निमावाहयं सोममावाहयमग्निसोममावाहयामि प्रजातिमावाहयं ब्रह्माण्डमावाहयम् इन्द्रमावाहयं वसुनावाहयं मर्तमावाहयं रुद्राणावाहयामि अवोपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयं वरुणमावाहयम् आदित्यमावाहयामि अश्विनमावाहयं पूषणमावाहयं कक्षमावाहयं सोममावाहयामि अववासनयज्ञमावाहयामि यज्ञेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनपान्द्राष्टनपाग्नेष्टनपा सोमाष्टनपाग्नेष्टनपा सोमाष्टनपामि अग्निशोमाभ्याष्टनपां प्रजापतिष्ठनपां ब्रह्मणेष्टनपा इन्द्राष्टनपां सुभ्याष्टनपामि मरुद्भ्योष्टनपां रुद्रेभ्योष्टनपामि अपापस्पृश्यः ओम श्री महाविष्णुवेष्टनपां मित्राष्टनपां वरुणाष्टनपां आदित्यभ्योष्टनपां सुभ्याष्टनपामि पूष्णेष्टनपां कक्षाष्टनपामि सोमाष्टनपामि औपासनयज्ञाष्टनपामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्योष्टनपामि सर्वदेवेभ्योष्टनपामि आज्यं त्रिप्रतिश्रियामि चरं त्रिप्रतिश्रियामि अग्ने ज्योतिषि समिते स्वाहा अमृतं सुभारणमसि अन्तर्दं रक्ष अन्तर्धारातयः प्रतिष्ठा रक्ष प्रतिष्ठारातयः चिक्परिस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्परिस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्ता सवितापना त्वच्छिद्रेण स्वाहा मूलाग्राभ्यां स्पर्शयित्वा अध्यक्षाम् अक्षताम् आज्ञां वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नेय नमः जातवेसे नमः सोहसे नमः वरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्व नमतेन मन्यस्व सरस्तेन मन्यस्व देवसवितप्रसुवा षष्टिशतसहस्राः नितमक्षमर्भदमानया अन्त्यद्मा आत्माजाद्वेदस्तेनेध्वस्य वदेजेत्वदेजास्मान् प्रजापशुब्रह्मत्सेनान्नाद्येन समेतया अस्मिन् औपासनादिगुण्डे ब्रह्मन् समं विघ्नम् आधास्ते आधस्वा समेते स्वाहा वायुव्यादाग्नेयन्तं प्रजापतये स्वाहा नित्यादिशानन्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यः स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपापस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा सिभ्याय स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा क्षय सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्या सर्वं सावित्र्या गृहीत्वा व्याहतिर्ज्योति ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भो सो स्वाहा ऐते नमगस्थाः अनुमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासाभिः ओम भूः अतिवरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं
आघार होमांते सर्वंतरिव्यातृणात् प्रस्तात् मुतो दिवाद वैष्णव होष्ये तेन मुनिस्वानुतेन मुनिस्वास्रस्तेन मुनिस्वा देहो तपसुवा ओम मतो देवाहं द्रुतौष्णचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधान देवदं समोढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्या तदधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विसेतोः वृतानुस्ते नृस्य जसगा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवि वचक्षादग् स्वाहा तद्विप्रासो पञ्चमाचार्ध्रुवां तस्मिन्ते विष्णोरित्रं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा ऐते नमकस्थाः नमते नमकस्थाः सरस्ते नमकस्थाः देवसवितः प्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి मात्तादिकं कर्म निखिलं यनसूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः हृदिस्मृतिन्दे पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्नवम् अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्या परिमिशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां एकतमे पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशाहंकार महदव्यक्ताक्ष सप्तावर्णेरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्माणन्ताष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नितल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपातालाक्ष सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भूर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अधोभागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीक वामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य
अष्टदिग्दण्डसुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवती इत्यष्टदेवपुरी विराजते इन्द्राग्नियमुनिर्तिवर्णवायुकुबेरीशानाक्ष अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकचलवलयिते लवणेक्षुसुरासर्पितधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरिभूते जम्बूप्लक्षकुचक्रौञ्च सागरान्मलिपुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमले सह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्यपर्यात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकिम्पुरुषहारीरावृतभद्राश्वकेतुकमालकरमणककुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोर्हाकार 50 विस्तीर्ण भूमण्डले 1,00,000 विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेकजन्मसु ह्यजन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धिकेषु रहस्यप्रकाशे च आवृत्तानावृत्तमहापातकादि समस्तदुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितदामात्सङ्घातपकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कुतरासेद्वदसहस्रावसाने एकैकतिलापकृष्णक्रमेण सर्वराशपसंमितकाले श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्ठामतिराप्ताप्तोर्याम शान्तवनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतकृतपुण्यफलावात्यर्थम् आमोदप्रमोदसम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षप्रसिद्ध्यर्थं परव्यूहवन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपरोणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्टाद्वितगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादानमहादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गिरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूहवन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आङ्गिरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गिरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशरणः पुत्राय आङ्गिरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तालोकपरिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यदिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासो जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनाप्नुवान और्वैदलपञ्चार्षे प्ररान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अनन्तगुणात्मकां भृगोसङ्कल्पतनयां भार्गवीम् उत्तरफल्गुनीनक्षत्रे कन्यारासो जातायां श्रीदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं
काश्यपावत्सारणैध्रुवत्रयार्षे प्ररान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनीयां काश्यपीं रेवतीनक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैरुदां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्षया सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्षामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु। பக்தர்களே, கல்யாண சக்கரவர்த்தியான எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் பிராட்டிவார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு கன்யாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வு மங்களகரமாக நிறைவேறியது. இனி அடுத்து திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யங்களை மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்கியம், பாத்தியம், ஆச்சமனம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்து எம்பெருமானின் திருவடிகளில் வைத்து மானசீகமாக பூஜைகள் செய்வார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் வழக்கம் போல சில நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். அந்த காலத்தில் வேட்டுப் பெரியவர்கள் பேசும்போதே பழமொழியுடன் தான் பேசுவார்கள். இதை அவர்கள் பழமொழி என்று சொல்வதில்லை, வச்சனம் என்று சொல்வார்கள். எங்கள் பாட்டி நாங்கள் சிறுவயதாய் இருக்கும்போது வீணாக பிடிவாதம் பிடித்தால் சீத்தை அழுதுகெட்டா, பாஞ்சாலி சிரிச்சுகெட்டா என்று பெரியவாள்லாம் வச்சனம் சொல்லுவா என்பாள். அப்போதெல்லாம் இது எனக்கு புரியாது. பெரியவளாகி ஸ்ரீமத் ராமாயணம், மகாபாரதம் போன்ற இதிகாசங்களை படிக்கும்போதுதான் அன்று பாட்டி சொன்னதன் அர்த்தம் விளங்கியது. கைகேயி வேண்டி பெற்ற வரத்தின்படி ஸ்ரீராமன் வனவாசம் கிளம்பிவிட்டார். மர உரி தரித்து சீதாதேவியிடம் விடைபெற வரும்போது திகைத்துப் போன தேவி, உங்கள் எண்ணம் அதுவானால் என்னையும் உங்களோடு அழைத்துச் செல்லுங்கள் என்கிறார். ராமன் காட்டிலுள்ள அபாயங்களையும் பெண்களால் அவற்றை சமாளிப்பது எவ்வளவு கஷ்டம் என்பதையும் விளக்குகிறார். ஆனால் சீத்தையோ விடுவதாயில்லை. இருவருக்குமிடையே எத்தனையோ வாத பிரதிவாதங்கள். ராமன் இருக்குமிடமே சீதைக்கு அயோத்தி. என் தகப்பனார் என்னை தங்களுக்கு கல்யாணம் செய்து கொடுக்கும்போது என்ன சொன்னார் நினைவிருக்கிறதா? நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் அங்குதான் நான் இருக்க வேண்டும், உங்களை ஒரு க்ஷணமும் பிரியக்கூடாது என்று சொன்னார் அல்லவா என்று எதிர்கேள்வி கேட்கிறாள். அப்படியும் ராமனுக்கு சீதையை தன்னுடன் அழைத்துச் செல்வதில் உடன்பாடில்லை. அதன்பின் முடிவாக சீத்தை கண்ணீர் விட்டு அழுததும் ராமனால் பொறுக்க முடியவில்லை. ஆகவே அவளையும் கூட்டிக் கொண்டு போக சம்மதிக்கிறார். பலன், சூர்ப்பனகியின் தூண்டுதலால் லங்கேஸ்வரரான ராவணன் சீதையை சிறைபிடித்துக் கொண்டு போய் அசோகவனத்தில் வைக்க அரக்கியர்களின் மத்தியில் பலவிதமான துன்பங்களுக்கு ஆளானாள் சீதை. இதைத்தான் சீதை அழுதுகட்டாள் என்கிறார்கள். அதே போல மகாபாரதத்தில் யுதிஷ்டர் வயதில் மூத்தவர், அவருக்கே யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் என்றதும் துரியோதனனுக்கு பொறுக்கவில்லை. எப்படி ராமாயணத்தில் மந்தரையின் போதனையால் கைகேயின் புத்தி கெட்டதோ அதே போல மாமன் சகுனியின் தூண்டுதலின் பேரில் பிடிவாதம் பிடிக்கிறான் துரியோதனன். ராஜ்யம் முழுவதும் தனக்கே என்று. அவனை மறுக்கவும் திருதராஷ்டிரனுக்கு, அதாவது அவரது தந்தைக்கு மனமில்லை. பலன், அஸ்தினாபுரம் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டு இந்திரபிரஸ்தம் யுதிஷ்டருக்கு கொடுக்கப்பட்டது. பாண்டவர்கள் தங்கள் உழைப்பாலும் வலிமையாலும் கண்ணனின் உதவியாலும் இந்திரபிரஸ்தத்தை ஸ்வர்கபுரியாக ஆக்க இதை கேள்விப்பட்ட துரியோதனன் பொறாமையோடு தர்மரின் அழைப்பின் பேரில் இந்திரபிரஸ்தம் வருகிறான். தேவலோக சிற்பியான விஸ்வகர்மாவினால் அமைக்கப்பட்ட அந்த அரண்மனைகளும் மாட மாளிகைகளும் அவனுடைய குரோதத்தை இன்னும் அதிகமாக்கினவாம். யுதிஷ்டரின் மாளிகைக்குள் போனான். அங்கே எல்லாம் கண்ணாடி போல் மின்ன எந்த பக்கம் நுழைவது என்று தடுமாறுகிறானாம். கண்ணாடியை தண்ணீர் என்று நினைத்து தாண்ட போக கண்ணாடியில் முட்டிக்கொள்கிறான். தடாகத்தை கண்ணாடி என்று நினைத்து தாண்ட போக நிலை தடுமாறி கீழே விழுகிறான். தோழிகளோடு இதை பார்த்தாளாம் பாஞ்சாலி, பாண்டவர்களின் பத்தினி. கலகலகலவென்று சிரிக்கிறாள். அத்தோடு விட்டாளா?
வேடிக்கையாக மச்சினருக்கும் அவருடைய தந்தையைப் போல கண்கள் குருடோ என்று வேடிக்கையாக பேச பலன் அவமானம் தாங்காத துரியோதனன் வஞ்சக சகுனியின் போதனையால் யுதிஷ்டரை சூதாட்டத்துக்கு அழைத்து தனக்கு பதிலாக சகுனியை ஆட வைத்து யுதிஷ்டரின் ராஜ்யம், செல்வங்கள், ஏன் தம்பிகள், முடிவாக மனைவியான பாஞ்சாலியை கூட பயணம் வைத்து அத்தனையும் இழக்க வைத்தான். அத்தனையும் இழந்து கானகம் போகும்படியான நிலைமை வந்தது. எதனால்? பாஞ்சாலி துரியோதனை பார்த்து சிரித்ததால் தானே. ஆகவேதான் சீத்தை அழுது கெட்டால் பாஞ்சாலி சிரிச்சு கெட்டாள் என்கிற அந்த வசனம் உண்மையாக ஆனதல்லவா? இத்தனைக்கும் பாட்டி எந்த காவியமும் படிக்காதவள். தன்னுடைய பெரியவர்கள் சொல்கிற அந்த செவி வழி செய்திதான். ஆனால் பெரியவர்கள் சொல்வதில் அவளுக்கு நம்பிக்கை இருந்தது. இந்த கால கம்ப்யூட்டர் யுக குழந்தைகள் பெரியவர்கள் என்ன சொன்னாலும் அதை கேட்பதில்லை. தங்கள் இஷ்டம் போல நடந்து கொண்டு முடிவில் ஆபத்தில் போய் மாட்டிக்கொள்கிறார்கள். பக்தர்களே, இதையெல்லாம் அறிவுரை என்று நினைக்க வேண்டாம். இதன் மூலம் நான் சொல்வதன் உள்ளர்த்தம் என்னவென்றால் நம்பிக்கை. இதோ இந்த திருவேங்கடத்து எம்பெருமான் தங்கள் குறைகளையெல்லாம் தீர்ப்பான், தங்கள் குடும்பம் நலம் பெறும் என்கிற அந்த நம்பிக்கையுடன் தானே இவ்வளவு பக்தர்கள் இங்கே திரும்ப திரும்ப வருகிறார்கள். அந்த பரிபூர்ண நம்பிக்கை ஒன்று போதும். மற்றதையெல்லாம் இந்த ஏழுமலையான் பார்த்து கொள்வான். இதோ இப்போது திருமாங்கல்ய தாரணத்துக்கான வேலை வந்துவிட்டது. சர்வமங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதகே சரண்யே திரியம்பிகே தேவி மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே என்று அந்த தாயார்களை சுமங்கலீர்யம் மதோரிமாகும் சமேதபஸ்ததா சௌபாகியமத்வை தத்வாஜாதாஸ்தம் விபரேதன மாங்கல்யந்தந்தனானேன லோகரக்ஷண ஹேதவே கண்டே பத்ராம் ரிகுபே ரக்ஷத்வம் பவனத்ரயம் ஸ்ரீதேவ்யை நமः மாங்கல்யதாரண சமுர்த்தோஸ்து பவந்தோ மகாந்தோ நிருண்ணந்து சுமுகூர்த்தோஸ்து பிரஜாபதிஸ்தாம் கம்ராஜானமசృజத தந்த்ரயோ வேத அன்வசృஜ்யந்த तान् हस्ते कुरुद अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागुं समेतपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्त्वाजाधास्तं विपरेतन मेदिनी देवी वसुन्धरा स्यादुदा देवी वासवी ब्रह्मवत्सः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो निरुण्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక మోదముతోనొక మాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక మోదముతోనొక మాని మొదల పోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు
అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక దృశ్యం సమానాయ ప్రమోషి స్వాహ తన్నాగ్నే వృణసిద్వాన్ దేవసేడవయా శ్రేష్ఠాః యజుష్ఠా వండితమస్సో జాను విశ్వాద్వేషాగం సుప్రముత్య స్వాహ తత్తన్నాగ్నే మోభవతి నేదుస్యోత్సవజుష్టౌ అవయక్షుణో వరుణం మృడాణో విహిమృడీగం సుహోణీయధి స్వాహ త్వమగ్నే అయాస్యాసన్మనసాయతః అయాసన్ హవ్యమూషేయానో దేహి వే జగ్ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వ స్వాహ ఓం భూర్భో స్వ స్వాహ ఐతే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్తే నమగస్థాః దేవసవితః ప్రాసావీః ఓం భూః అతిపురోక్తనిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సర్మాంగం లాజహోమం హోష్యే ఐతే నమనిస్వా నమతే నమనిస్వా సరస్తే నమనిస్వా దివ్యతపసువా ఇమాం లాజాంతి ఆజ్యం విగాజ్యాం ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికిరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యబ్రూతేగ్నౌ లాజానౌపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపదరేదంతాజ్ఞాతయో స్వాహా ఉదాయుసా స్వాయుషోదోహదేనాగుంభసేనోత్పర్జన్యస్య సుష్మేణోతస్థామృతాగుం అను విశ్వావృతత్వయాభుజం ధారావధన్యాయివ అతిగాహేమహిద్దిశః ఇమాం లాజానోపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యబ్రూతేగ్నౌ లాజానౌపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపదరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుసా స్వాయుషోదోహదేనాగుంభసేనోత్పర్జన్యస్య సుష్మేణోతస్థామృతాగుం అను విశ్వావృతత్వయాభుజం ధారావధన్యాయివ అతిగాహేమహిద్దిశः ఇమాం లాజానోపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యబ్రూతేగ్నౌ లాజానౌపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపదరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుసా స్వాయుషోదోహదేనాగుంభసేనోత్పర్జన్యస్య సుష్మేణోతస్థామృతాగుం అను విశ్వావృతత్వయాభుజం ధారావధన్యాయివ అతిగాహేమహిద్దిశः ఓం భూ స్వః ఓం భూ స్వః ఓం స్వ స్వః ఓం భూర్భో స్వ స్వః ఐతే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్తే నమగస్థాః దేవసవితః ప్రాసావీః ఓం భూవతిపురోక్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సర్మాంగం లాజహోమాంతే సర్వంతరివిర్యాతరణాత్ ప్రాస్తాత్ ముద దేవాజ వైష్ణవం హోష్యే ఐతే నమనిస్వా నమతే నమనిస్వా సరస్తే నమనిస్వా దేవతప్సువా అతో దేవాహంతరదౌష్ణచక్రమే పృథివ్యా సప్తాం విశ్వాహ ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రేధాని దేవతం సమూఢం స్వాం శ్రే స్వాహ త్రీణి పదాచక్రమే విష్ణుగవాదాభ్యాధర్మాన్ ధారయన్ స్వాహ విష్ణో కర్మాణి విస్తృతోః వృతానుసేంద్రసేజ్జసఖా స్వాహ తద్విష్ణోః పరమం పదం సదా సంసురేః దివీపచక్షరాదగ్ స్వాహ తద్విప్రాసో భుజభోజార్ధ్రవాగం దశవింతే విష్ణోరత్నం పదగ్ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వ స్వాహ ఓం భూర్భో స్వ స్వాహ ఐతే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్తే నమగస్థాః దివ్యతప్రాసావీః ఓం భూతిపురోక్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సర్మాంగం కర్మసాఫలదత్తం పరిష్టాతంత్రం కరిష్యే ఐతే నమనిస్వా నమతే నమనిస్వా సరస్తే నమనిస్వా దేవసవితప్సువా యదస్య కర్మణోత్తిరేతం యద్యానేన విహాకరం అగ్నిశ్చష్టాశతం కరోతు స్వాహా అగ్నే షష్టగతే శ్రోతాహుతాదేనాం కామానాగ సముద్రత్రే స్వాహా అగ్నే స్వాహా అగ్నేర్నాదాయ స్వాహా అగ్నేర్పదే స్వాహా ప్రజాపతే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వాభ్యో దూతాభ్య స్వాహా సర్వత్రైవాదుష్టం సర్వత్రైవానాదుష్టం దేవతముస్మై స్వాహా అగ్నే షష్టగతే స్వాహా వాస్తుపదే నమో వాస్తుపదే స్వాహా యన్మ ఆత్మనామిందాబోదగ్నిస్తత్పనరః జాతవేదావచిష్ణ స్వాహా పునరగ్నిచక్షురాత్మేంద్ర బృహస్పతి పునర్మ్యాశ్వాజ్యం జక్షాత్మక్షో స్వాహా ఇష్టేభ్య స్వాహా వశిష్ఠేభ్య స్వాహా భేజం దృష్టే స్వాహా నిష్కృత్యై స్వాహా దేవరాధ్యై స్వాహా దేవీభ్య స్వాహా తనూభ్య స్వాహా రుద్ధ్యై స్వాహా సమృద్ధ్యై స్వాహా సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహా ఆశ్రావితమధ్యాశ్రావితముషట్కృతమత్నోక్తంచగ్నే అతిరిక్తం కర్మణి క్షీణమిఘ్న పర్వాణి పుణ్యేతి కల్పయన్ స్వాహా దేవాన్ స్వాహా ఏధోశేష ధీమహి స్వాహా సవిదసి तेजोस तेजोमय धे स्वाहा यमस्ति में त्योर्मे बाय स्वाहा सूर्यस्ति में चक्षुर्मे बाय स्वाहा समस्ति में चित्तम में बाय स्वाहा
वायोर्धि मे प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणोधि मे बुद्धि मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तविश्वा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्र सप्तात्वा सप्तयोनिरावण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं द्योर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं ओषधि वनस्पतिं दर्भास्य भुक्तं अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं द्योर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं ओषधि वनस्पतिं दर्भास्य जीर्णं स्वाहा समन्तां भवेशागतेन समादित्यैर्वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तविश्वा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा इन्द्रिय सप्तयोनिरावृण स्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदु वेदस्त्रिपदु देवस्त्रिपदु पृथ्वीस्त्रिपदु ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वषधिं सुन्दरवासुदेतिप्यन्तां यदक्षप्रदा महाप्रदामः साक्ष्यम सत्यप्यन्ताम् ऐतेनमग्रस्ताः नमतेनमग्रस्ताः सरस्तेनमग्रस्ताः देवसहितः प्रासाभिः पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा क्षमामेः चेष्टाः प्राच्याः देवात्पुरमार्जयन्तां दक्षिणाजां दिस्मताः पितरमार्जयन्तां मार्जयन्तां दक्षिणतः परदेवपणयाम् उत्तरतः परदेवपणयां पश्चिमतः परदेवपणयां दक्षिणतः विष्णुः सदनमसि पश्चिमतः विष्णुः सदनमसि प्राच्यां विष्णुः सदनमसि सर्वान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वा मा भवोषधे अमृतां वृषधेश्च दिवं गच्छततो नवृष्टिमेरे स्वाहा शुद्धन्तां देवसदनं शुद्धन्तां देवसदनम् भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्त्योद्भुतिः आदित्यस्तमो नमः त्रियाशं जमदग्ने चतुर्षत्रियाशं त्रिदेवानां त्रियाशं तन्मे अस्तु त्रियाशं दीर्घायुत्वाजा बलाजा शताजा सदन्त्यरपुषे त्रियाशम् आभोहिष्ठामयोभोस्थानभूतेदादना महेरणा दक्षे यपस्वतमार्दस्तवादेन विषदीर्यो मात्रादस्मारङ्गमाभो शक्ष्या जन्मदा आपो जनेधादिनः यत्तेऽग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्विनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियेन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्राजो दातु जोक्षसूर्यन्दृशे यवदगान् मातोर्नवः दिव्राजमानस्य समध्या समाषपोरो दाक्षसूर्यो प्रसन्मनसा पुनातु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा हृदयात्मना वा प्रदेशभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोभारं निवेदयामि आज्योभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यं प्रयच्छ सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु அஞ்சனமிடுதல் என்கிற திருஷ்டி கழிக்கும் நிகழ்வும் நடைபெற்றது. இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். பூமகன் புகழ் வானவர் போற்றுதற்கா மகன் அணி வானுதல் தேவகி மாமகன் மிகுசீர் வசுதேவர் தம் கோமகன் வரில் கூடிடு கூடலே. இது நாச்சியார் திருமொழி.
வசுதேவரின் மைந்தனான வாசுதேவனையே மணக்க வேண்டும் என்கிற வேட்கையோடு இருந்தவள் ஆண்டாள் பிராட்டி. அந்த கல்யாணம் எப்படியெல்லாம் நடக்க வேண்டும் என்று அவள் கனவில் கண்டாளோ அதை தன் தோழிக்கு எடுத்துச் சொன்ன பாசுரங்களே வாரணம் ஆயிரம் என்று தொடங்கும் 10 பாசுரங்களாகும். அவற்றை இந்த தேங்காய்களை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்து வருவது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. பக்தர்களே, அடுத்து இன்னொரு அழகான நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். ஓயும் மூப்பு பிறப்பு இறப்பு பிணி வீயுமாறு செய்வான் திருவேங்கடத்து ஆயன் நாள்மலராம் அடித்தாமரை வாயுள்ளும் மனத்துள்ளும் வைப்பார்கட்கே என்கிறது திருவாய்மொழி. பிறவிப் பெருங்கடலை தாண்ட திருவேங்கடத்து எம்பெருமானின் திருவடித் தாமரைகளை பற்றினோமானால் நமது மூப்பு பிறப்பு இறப்பு பிணி இவை அனைத்தும் நீங்கும் என்கிறார் நம்மாழ்வார். பக்தர்களே, அந்த திருவேங்கடத்து எம்பெருமான் தரிசனம் தரும் திருமலையில் உத்தியானவனத்தில் இல்லாத புஷ்பங்களே இல்லை எனலாம். மாலை சூடும் விற்பன்னர்கள் அந்த புஷ்பங்களை கோவிந்த நாமாவளியை சொல்லிக்கொண்டே எம்பெருமானுக்காக கட்டுவார்களாம். பக்தர்களே, அந்த புஷ்ப மாலையே இந்த முகூர்த்த மாலை. முதலில் எம்பெருமான் தோள்களில் சூடிய அந்த மாலை எம்பெருமானின் திருமார்பு ராச்சியாரான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. அடுத்து இப்போது மீண்டும் எம்பெருமானிடமே வந்து சேர்ந்தது. இதையடுத்து ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணினாலே அந்த சூடிக் கொடுத்த சுடர்கொடி பாடிக்கொடுத்த பைங்கிளியான பூமாதேவிக்கும் இப்போது எம்பெருமான் சூடிய அந்த முகூர்த்த மாலையை சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சக சுவாமி. அவள் சூடி அழகு பார்த்ததும் மீண்டும் அதே புஷ்ப மாலை எம்பெருமானிடம் வந்து சேர இப்போது மாலை மாற்றும் கைங்கரியம் அழகாக முடிந்தது. பக்தர்களே, இனி அடுத்த கைங்கரியம் தேவிமார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு அருகில் கொண்டு சேர்த்து ஸ்ரீதேவி பூதேவி நாச்சியார்கள் இருக்க சம்பூர்ணராக இப்போது நமக்கு தரிசனம் தர உள்ளார் மலையப்ப சுவாமி. மூவரையும் ஒரு சேர பாக்கியம் நம் கண்களுக்கு கிடைக்க உள்ளது. பக்தர்களே, அடுத்து அர்ச்சக சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதையானதும் அக்ஷதாரோபணம் என்கிற மங்கள அட்சதையை தம்பதிகளின் சிரசில் சேர்க்கும் நிகழ்வு நடைபெற உள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து கற்பூர மங்கள ஹாரத்தியுடன் திருக்கல்யாணம் நிறைவு வரும். தொடர்ந்து 30 முக்கோடி தேவர்களும் நம்மோடு சேர்ந்து எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண வைபவத்தை கண்டு கழித்ததாக ஐதீகம். பக்தர்களே, நமக்கு ஆதி தம்பதிகளின் திருவருள் கிடைக்க பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు
विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ